Hello, everyone, and welcome to the Unravel Travel Podcast, a show where we invite travelers and listen to their travel journeys and try to understand how travel has impacted their life. Our today's guest is someone who I met 2 years back in Jibhi, Himachal, where we both were staying in a hostel, uh, working from the mountains for a long duration trip back in October 2020. Bhunesh is someone who's been traveling for the last 4 to 5 years, and over the last 1 year, he's been living in the mountains to work on his passion project. In our today's conversation, we talked about how traveling for a long duration can be a great alternative as compared to those short, hectic trips that we take. We also talked about how living in the mountains has changed his behavior for good and all the challenges that he faced while shifting to the mountains. The show starts in 3, 2, 1, go. So Bhunesh, क्या हालचाल आपके? हाय सय्यम, ऑल गुड। आप बताओ कैसा चल रहा है आपका? वेयर आर यू नाउ डेज? मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। मैं लास्ट 3-4 महीने से घूमने नहीं जा पाया, बट हाँ, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक lot द of things विंटर्स आर happening, कमिंग, but तो yeah. आप काफी अपॉर्चुनिटी रहेगा अभी वापस से घूमने के लिए। सो या I'm planning to travel to Kerala in the month of December. So नाइस, that's गुड all. टाइम टू गो Yeah. देयर या। It has been on my list for a while, so उसको जरूर check out करना है मेरे को. कूल। So अभी मनाली में हो ना तुम? यस। या। कैसा चल रहा है? It's been a while. मतलब हम मिले थे last 3-4 months हम्म। back जब हम मिले थे. And कितने टाइम से हो मनाली में? मनाली में आई थिंक बीन हियर सिंस लास्ट ईयर आई गेस। एक साल तो पूरा हो ही गया यहाँ पे भी। इसके Hmm. पहले हम लोग बीर में थे अराउंड 6 महीने के लिए। देन वी वर इन लद्दाख एंड तो काफी सारी जगह भी तब से ही चल I रहे think हैं। you went to Kashmir हाँ, as well for a करेक्ट। while. कश्मीर गए थे 1 महीने के लिए। 1.5 महीना 1.5 महीना लद्दाख में भी रहे, तो काफी टाइम स्पेंड किया सब जगह पे आराम से। एंड देन इवेंचुअली वापस मनाली आके ही सेटल हो गए हैं। अभी तो काइंड ऑफ अपना घर जैसा बना लिया इधर अभी। तो अब यही घर है फिलहाल। मनाली एक सॉर्ट ऑफ वो हो जाता है ना, सेंटर पॉइंट टू गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तभी मैंने देखा लॉट ऑफ पीपल मेजरली सेटल इन मनाली, जिनको ट्रैवल करना होता है काफी जगहों। Correct, because यहाँ से काफी it's so Manali is actually like a gateway to a lot of places. So you can go to Lahore, you can go to Spiti, you can go to Leh Ladakh, and now you can also go to Zanskar because it is much more accessible compared to हम्म. earlier times. तो उस context में या. Manali has a lot to offer, and probably one of the reasons why I settled here. तो but it has been good so far. Plus availability भी काफी अच्छी है यहाँ पे चीजों की। तो living perspective हाँ, से वो it's a भी very एक nice प्लस city. पॉइंट हो जाता है। Yeah, I can say that. नाइस। सो आई थिंक हम फर्स्ट टाइम मिले थे जब लॉकडाउन हटा था। जीबी में थे Yeah. हम, इन लिविंग इन अ सेम Yeah. हॉस्टल। So I think since then you've been traveling and traveling and traveling, right? Last दो 2-2.5 साल से, True. Yeah. almost 2 साल True. से. I think it's actually much more than that. So, fortunately, my previous job was also something which kind of gave me a flexibility to work from anywhere. So, in a sense, I've been traveling since 2017. तो ऑलमोस्ट Hmm. 5 years हो चुके हैं अभी, जहाँ पे वी बीन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। अर्लियर आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, बट देन सिंस आई गॉट मैरिड एंड आल्सो माय वाइफ इज प्रीटी मच कीन टू ट्रैवल। सो अभी हम दोनों साथ में काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं, काफी सारी जगहों पे जाते रहते हैं। एंड वी ट्राई टू स्टे Hmm. एट प्लेसेस एट लीस्ट फॉर अ मंथ और सो दैट वी आर एबल टू एंजॉय देम a bit more, not just in the sense of going there and कि बस जाके जगह कवर कर ली और आ गए वापस, but instead of doing that, we try to stay there, be with the locals in real sense, try to eat good food, the local food, because हम दोनों को ही खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो I think our major motto is always about traveling to places and eating different sort of cuisines. So वही हमेशा करते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। Nice. हाँ, और आजकल सॉर्ट ऑफ ऐसा हो भी गया कि लोग जाते हैं 2-3 दिन में घूम के आ जाते हैं। हम्म। I mean, it's more like कि tick off all the Yeah. places you've been to instead of getting to know the people, getting to know the culture of that place. अब मेरे को तो लगता है, मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू ट्रैवल फॉर लाइक अ मंथ लाइक यू डू, Hmm.
बट एटलीस्ट आई ट्राई ट्राई कि एटलीस्ट 1 वीक तो मैं ट्रैवल करूंगी हम्म इफ आई एम गोइंग टू अ वन हम्म प्लेस, कि 2-3 दिन तो तुम्हें वहाँ पे सेटल होने में, वाइब कैसी है वहाँ पे उस जगह की, उसमें आने में टाइम लग जाता है. That's right, but I think it also depends on how much time do you have for travel, because for a lot of people, ट्रू. it is more about just a recreational activity, right? So a lot of people cannot afford to really travel for months and months or weeks maybe as well. So it also depends on that, श्योर. and at the same time, it is also about your intent as how you perceive travel. हम्म. कुछ लोग के लिए travel is just about कि बाहर गए घुमा फिरा आ गए. That's one way of looking at it. But the other way around, a lot of people would want to have taken it very slow and आराम से जाके रहते हैं थोड़ा, you settle in the environment, you settle in the हम्म. place location that you are in, and then you take your time to basically know more about the place. It's not just about taking those check boxes, but it is also about rather it is only about being in that place for that time. So आपका पूरा ध्यान उस जगह पे रहता है and you are giving it proper attention which it really needs to श्योर. know better. तो I think हर एक इंसान का अपना अलग अलग perspective है about travel. अपना अपना Correct. पर्सपेक्टिव. Yes. दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. आई मीन फॉर मी, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 2016 में ट्रैवल करना स्टार्ट स्टार्ट किया था, 2016 Hmm. 2017. तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था ट्रैवल करने का कि टू कट ऑफ फ्रॉम ऑल द वर्क प्रेशर, ऑल द टेंशंस दैट आई हैव इन द सिटी, Yeah. एंड टू गो टू अ रिलैक्स्ड प्लेस Hmm. जहाँ पे मैं मतलब स्लो लाइफ एक्सपीरियंस कर सकूँ, लोकल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ, मेजरली टू रिचार्ज माई सेल्फ, ताकि मैं इफ आई कम बैक विद फुल पावर एंड एनर्जी. That was my goal. So what was your motivation to start traveling? I think कोई specific reason था? initially तो ऐसा ही था because in the early stages of my career when I started my first job back in 2013, so initial एक दो साल तो full on सिर्फ काम काम किया and there was nothing else. So I guess the initial burnout was the primary reason कि travel करना शुरू किया, and that's how it started for me at least, because as a child we were not able to travel much because of certain family conditions. तो उतना घूमना फिरना हुआ ही नहीं हमारा कभी. The only travel I knew was to my grandparents' place. छुट्टियां होती थी आप ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हो, एंड दैट्स द ओनली ट्रैवल आई न्यू अबाउट. But then after my college and then after my first job or last जो first 2 years थे उसके बाद I got this opportunity that I had my own money to travel with first of all, and then थोड़ा बहुत हम्म. बहुत ज्यादा मन भी करता था घूमने के लिए. I because I was inspired from a lot of people I keep on meeting in different places, तो वो लोग अपनी कहानियां बताते थे, तो I guess that was something which gave me let's say a little bit more motivation to travel more. And जब शुरू किया तो initially exactly the same reason कि पहले आप गए थोड़ा सा रिचार्ज हुए वापस सिटीज में आए एंड देन यू स्टार्टेड लिविंग योर नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ. बट देन इवेंचुअली फिर वो रियलाइजेशन ऐसा आया कि व्हेन यू गो आउट देयर इट इज आपको लगता है कि यू आर एक्चुअली गेटिंग रिचार्ज, बट इट डजंट वर्क दैट वे. सो इट इज जस्ट दैट you are stressed in a better place, that's all. It Yeah. started to feel like that for me. So so what happened eventually is कि after some time when I started liking this routine of being into different places in different times, so I think I got into a habit of not liking to stay at one place. पहले तो वहां से शुरू हुआ ये चीज कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि एक ही जगह अच्छा. पे रहते रहते वही सेम रूटीन हो गया था. तो वो जो सेम रूटीन का मोनोटनी था, that was something which triggered this, and then after that it just became a habit, I guess. I used to like to travel to different places, go to different places, meet different people, eat different food. तो उसमें बस मजा ही आने, एक अलग सा नशा ही आने लगा उस चीज में. एंड अभी भी वो कंटिन्यूड है. एंड फॉर द सेम रीजन आई थिंक we decided to stay in this place. I hope it continues as well, but again, as life grows, your priorities, your dynamics change as well. तो आगे देखते हैं क्या है, but I think Yeah, for I'm sure. taking it as it comes for the time being, and मजा आ रहा है फिलहाल तो अभी. Yeah, I mean, I resonated with so much as Yeah. well. मेरे भी बचपन में मतलब I haven't got the chance to travel that Mm. much. मेरे पेरेंट्स इतना ट्रैवल नहीं Mm. करते, तो उसी वही वही वन ऑफ द रीजंस कि भाई एक्सप्लोर करना है, दैट इज वन ऑफ द Mm. रीजंस फॉर श्योर. So, I mean, you are now like settled, sort of settled here for the time being. So, do you sense any changes in your behavior? I mean,
यहाँ पे मतलब मोस्टली सिटी में स्ट्रेस्ड रहता है एनवायरनमेंट में, एंड जो कंसंट्रेशन भी इतना नहीं रहता. Hmm. Do you think that you have noticed some change as compared to shifting permanently to a one place in the mountains? I think yes, changes definitely हुए हैं और बहुत सारे changes हुए हैं in my behavior, in my approach to life and how I see things around. काफी सारी चीजें change हुई हैं. I mean, back when I was living in the cities, so you are mostly surrounded with the like-minded people. आप usually you are going to the office, coming back to home, तो आपके कुछ set of friends होते हैं या तो फिर आपका office जो peer group होता है आप उसमें ही रहते हो. You hardly meet any new person. The only time you will meet a new person is maybe when you're going to a restaurant and pub. वो भी कभी कदार बाय इंसिडेंट आपकी बात हो गई तो हो गई, बट Hmm. अदर देन दैट वी डोंट रियली It's इंटरेक्ट. sort of bubble हाँ, bubble में सो एक रहते वो हो. बबल बना रहता है, बट यहाँ पे आने के बाद कैसा है ना, वो इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं अपने आप ही. यू डोंट, आई कैन सिंपली जस्ट, आई कुड बी जस्ट वॉकिंग अराउंड इन द स्ट्रीट, आई कुड से एनीबॉडी हाय एंड बैठ के हम बातें करने लगते हैं किसी के साथ भी. तो इतना ज्यादा फ्लूइडिक नेचर ऑफ कॉन्वर्सेशंस हो जाता है यहाँ पे कि आपको रियलाइज भी नहीं होता दैट यू आर एक्चुअली लिविंग इन अ स्ट्रेंज और अ न्यू प्लेस ऑल टुगेदर, बिकॉज एवरीबडी, not everybody but mostly people are really open Yeah. to talk around here. And because जो surroundings है और यहाँ का जो environment है वो kind of उसको support भी करता है. So that ways I think it has changed my life a lot. And then at the same time, because I am a person who is constantly doing something, कुछ ना कुछ चाहिए मुझे करने के लिए. So यहाँ पे आके ऐसा होता है कि अभी आप सिंपली बस जाके बालकनी में बैठे भी हुए हो तो आपका टाइम पास हो जाता है. सो यू डोंट नेसेसरली नीड समथिंग टू डू एट ऑल टाइम्स. तो वो खत्म भी हो गया, वो टाइम पास करने की स्क्रीन जरूरत नहीं टाइम भी कम पड़ती हो है. जाता, स्क्रीन टाइम भी कम हो Absolutely, जाता होगा. yes, yes. Because अभी कैसे काम किया, अब the only time I want to look at my laptop is when I'm working, when my office hours Yeah. are going or something like that. Other than that, I simply shut off my laptop and I really do not want to open it ever. तो फिर आराम से बस फिर यही रहता है. तो काफी ज्यादा आपका जो माइंड है ना वो बहुत फ्री स्पेस आपके पास रहता है और चीजें सोचने के लिए, करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत कारपेंटरी का शौक हुआ था मुझे, तो फिर उसको करने का टाइम है मेरे अच्छा. पास. कुकिंग करने का भी टाइम रहता है अभी. तो आई हैव रियलाइज कि शहरों से कंपैरिजन में यहाँ पे माई लाइफ इज मच मोर, लेट्स से वो 24 घंटे थोड़े ज्यादा लगने लगे हैं लाइफ में अभी कि हाँ टाइम काफी सारा रहता है. हाँ. लेट्स वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर नाउ. तो वो रियलाइजेशन तो है. And I bet it has increased your productivity at work as well, right? एब्सोल्युटली, आई मीन, You're able to do work in much less time as compared to working in the office or in the city. एक्चुअली ट्रू. That happened with me as या. well. Because मैं जब एक महीने के लिए शिफ्ट हुआ था माउंटेन्स में, हम्म. वहाँ मुझे आई नोटिस दैट जो मुझे यहाँ पे 3 से 4 घंटे लग रहे थे, हम्म. जो मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ या ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, वहाँ पे आई वाज एबल टू कंप्लीट दैट इन कपल ऑफ आवर्स. हम्म. बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस कम थी, पूरे टाइम नहीं, हर 2 मिनट बाद फोन चेक करना, स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, तो उससे दैट हेल्प्स अ लॉट, राइट? That's actually true because yes, that is one of the factors because you're not distracted with a lot of things. But दूसरा factor I think ये भी रहता है कि then because I want to do other things as well, I am looking forward to for them. हाँ. So I try to finish my work as early as possible. अपना काम खत्म किया, laptop बंद, then I need to श्योर. do more things. So I think श्योर. in that context also the productivity increases in both terms, not just in the office but also in your personal life as well. पर्सनल तो लाइफ वो इज. भी हुआ है certainly. So, I mean, you've been living in the mountains, as you said, in the Manali, especially for a year Yeah. now. So, uh, सबको grass is greener on the other side तो दिखता ही Yeah. है. So, do you face any problems while setting up your home there? A lot of problems actually, a lot of problems because I mean जितना आसान दिखता है. Especially in the winter, right? काफी problems I mean, आते you can see the difference right now also, right? You are wearing a t-shirt and I have to wear two jackets and a t-shirt just because that's the huge difference you see. I mean, temperature is definitely हैं. one of the reasons, but other than that, there are small challenges in life here because mostly आपकी चीजें यहाँ पे कैसे है कि आपको खुद से करनी पड़ती है. Just for an example, अगर because I live in a place जो कि थोड़ा सा रोड से ऊपर है and it is proper steep incline and then you have to come all the way over here. तो कुछ भी सामान लाना ले जाना है, every time you have to go down there and then वहां से सामान हाथ से उठा के आपको लेके आना पड़ता है. तो all those physical labor comparatively बहुत ज्यादा है इधर. तो if you are willing कि आप इतना physical labor कर सकते हो which is actually good for your body as well,
because then you're pretty much active all Yeah, throughout the day while you are just working for your daily chores. तो वो काफी अच्छा रहता है यहाँ पे. That's one of the things. And then you don't have Swiggy, Zomato or things like that where you can simply just order and everything is just a order away. yeah. तो जो सिटी की कन्वीनियंस है, definitely you are trading off them with a lifestyle which you have, which is much more healthier. At least that's what I think. At the same time, you are able to breathe fresh air, eat fresh fruit. So in that context, I think the lifestyle is the quality of life I feel is much better here. सो एक और चीज़ मैंने क्या नोटिस की थी जब लोग जाते हैं टू ट्रैवल, हमारा यहाँ पे सिटी में एक रूटीन बना होता है, राइट? हमें उठना है, जॉब काम पे जाना है, वहाँ पे इतने बजे मीटिंग है 1 घंटे की, फिर काम है, फिर मीटिंग्स हैं, देन वी कम बैक, ईट आवर फूड, गो टू स्लीप, सॉर्ट ऑफ अ रूटीन दैट वी फॉलो थ्रू आउट द डे. Hmm. And when we are trying to travel we take a break, right? That is considered a break to travel, but वहां पे जाके भी हम रूटीन फॉलो कर बना लेते हैं ऐसा अपना Ah. कि वहां भी मुझे सुबह उठ के यहाँ पे घूमने जाना Hmm. है, ये वाटरफॉल देखने जाना है, फिर ये देखने जाना है, फिर वो देखने जाना है. एंड व्हेन वी कम बैक हमारा ना माइंड रिलैक्स हुआ होता है ना बॉडी रिलैक्स हुई होती है, एंड वी आर बैक. हम बोल कह के तो आ जाते हैं वी Hmm. हम घूम के आए हैं, बट वी आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट वी वेंट टू डू. हम ब्रेक नहीं लिया हमने अपने रूटीन से. I think the primary reason for this is again because people have limited amount of time, and then because वो human curiosity तो सबके अंदर रहती ही है, and हाँ, सब तो कुछ सब देखना कुछ है एक देखना बारी. है एक बार, एंड टाइम भी मेरे पास 3 दिन का है, तो भाई एक दिन तो ट्रैवल में लग गया तो 2 दिन में कवर करना है. तो मैक्सिमम लोग उस थॉट प्रोसेस से ही सोचते हैं कि अब भाई 3 दिन बचे हैं, तो ऑब्वियसली दे वुड वांट टू कवर मोर. दैट्स ऑल्सो ओके फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट देन अगेन uh, if you can somehow, I mean, it's just my suggestion to people, if you can somehow try to club your holidays together or period wherein you can travel, थोड़ा सा टाइम लेकर खुद के लिए भी आओ, ताकि you're not just doing everything in a rush. Because then अगर वही रश ही करना है, then better as well stay in the city. Yeah, you come here, सुबह उठ के मुझे 6 बजे वहां एग्जैक्टली. जाके वो करना ही करना है because I have to do it. It's fine. I mean, maybe you have less amount of time, and that's why you want to do it. But at the same time, it doesn't really solve the purpose. You are just able to go there, click some pictures, post them on Instagram, and that's done. So अगर उतना ही motive है, then I think it's fine. But then if you really want to experience places, people and cultures, uh, slow travel is the only way to go, at least from my point of view. फॉर Yeah. श्योर, फॉर श्योर. एंड नाउ आई मीन यू हैव स्टार्टेड to build your own property there and starting your own hostel. It is live, right? It is partially live, yes, because as I said, one of the biggest challenges over here, getting things done is really, really difficult. And getting good labor is also a very big challenge around here. So, abhi चीजें partially start करेंगे. So we are running in 50% occupancy at the moment. But yes, we are live. Oh, Yeah. nice. Beautiful. I think I can see your background of Yeah, so these dorm rooms these as are well. actually our dorms, and I could find the quietest place around here because today it's empty. So I thought कि यहीं से call ले लेंगे आराम से. Nice. Perfect. Perfect. बढ़िया यार Yeah. दिनेश. और क्या नेक्स्ट क्या प्लान है? आर यू प्लानिंग टू ट्रैवल एनीवेयर रियल सून, Yeah. या अभी प्रॉपर्टी पे फोकस करना है? I mean, yes, property पे focus is definitely one of the things that I have to do, but at the same time, because कहीं ना कहीं जाने का तो रहता ही, so mostly जाते ही रहते हैं हम लोग इधर उधर आसपास. काफी सारी जगह है यहाँ पे जानने के लिए. So one of the best part about staying in Manali is a lot of small villages are around here. So the place that I हम्म. stay in, it's a small village called Goshal, which is just about 3 or 4 kilometers from old Manali. And then यहाँ से पास में एक और गांव है शनाग, फिर उसके आगे एक गांव है बुरवा, भांग, and then we have so many other हम्म. places as well which are quite close from here. हमता हो गया, आपका हलान हो गया, जगत सुख हो गया. So many places to go around. तो अभी कैसा है कि यहाँ पे रहते रहते we have met a lot of people, तो काफी सारे दोस्त भी बन गए हैं. तो अच्छा. if I have to go some place, वो घूमने के साथ साथ तो किसी से मिलना भी हो जाता है, वहां जाके चाय वाय भी हो गई, साथ में 2 कप कॉफी के साथ में बातें भी हो रही होती हैं. तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है. बट आई थिंक द लॉन्ग टर्म प्लान अभी ऐसे कुछ सोचा नहीं कहाँ जाना है, बट डेफिनेटली विंटर्स आर कमिंग एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट
सीजन्स ऑफ द होल ईयर, तो मे बी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेंगे, कहीं ना कहीं निकलेंगे ही। मोस्टली प्लान नहीं होता है इन सब चीजों का, बस निकल जाते हैं, फिर हो ही जाती हैं चीजें अपने आप ही। Chalo, yeah, it was great talking to सेम you. है। Thank you everyone for staying till the end of the video. If you really like the conversation, give it a thumbs up. And if you want to listen to more such conversations, subscribe to our channel. This is Sanyam Gulati signing off.